तो रिमोट जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आजकल हर किसी को चाहिए। और क्या सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफ़ी हैं टू जस्ट लैंड योर ड्रीम रिमोट जॉब? Actually, soft skills play a huge role in landing that remote job or getting the edge in that remote job. और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स जिन्होंने मेरी हेल्प करी इन लैंडिंग माई फर्स्ट एवर रिमोट जॉब। रिमोट जॉब्स डू साउंड रियली एक्साइटिंग और इट इज़ वेरी फन टू वर्क इन अ रिमोट जॉब और इन अ रिमोट एनवायरनमेंट। बेसिकली आप ट्रैवल कर सकते हो, यू कैन गो ऑन वर्केशंस, आप ट्रैवल करते हुए लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए, नए नए फूड ट्राई करते हुए, नई जगहों को देखते हुए। बेसिकली यू कैन डू एनी थिंग, ट्रैवल द वर्ल्ड, ट्रैवल न्यू सिटीज़। एंड आफ्टर ऑल दिस कल्चर एंडिंग अगेन विच इज़ रियली सैड, कोविड के बाद में नाउ ऑल द कंपनीज आर अगेन कॉलिंग बैक पीपल टू ऑफिसेज। बट आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं या काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं हु स्टिल बिलीव इन दैट रिमोट वर्किंग कल्चर एंड हु फील दैट कि वो एक्चुअली एक एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव बनाता है, विच इज़ रियली ट्रू। एंड यू व्हेन यू हैव योर इंडिपेंडेंस, जब आपके पास इंडिपेंडेंस होता है टू वर्क इन योर ओन टाइम, दैट्स व्हेन आई थिंक you work more dedicatedly. So basically after COVID, when all the jobs shifted to remote culture, remote working culture, I also was in a job जहाँ मैं रोज़ ऑफिस जाता था, and then I suddenly started to work at my home and I really liked that phase. और almost after 1 year I actually was working remotely from home और माई कंपनी एक्चुअली स्टार्टेड कॉलिंग पीपल टू बैक टू ऑफिस, बट स्टिल मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा था। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर काइंड ऑफ ऑन द लास्ट प्रायोरिटी बिकॉज देयर वर्क वॉज स्टिल वेरी डिजिटलाइज्ड और जाने की ज़रूरत नहीं थी। बेसिकली यू डिड नॉट नीड टू बी इन द ऑफिस टू एक्चुअली वर्क, क्योंकि आपका काम बेसिकली घर से हो रहा था। And so I left that job because it was a service based company. I did not liked the work, the project there, so I basically left it without any job security. But yeah, I left it because I was not liking it और मुझे बहुत ही ज़्यादा मन था to work in a product based company because I felt that service based companies do have a different working culture than a product based company. Product based company में you work on one product and you do iterations, आप उस product को और अच्छे से करते हो and you make that product as a high quality product. So I think in those 3 months of me not having a job, मैंने almost 10 to 15 interviews दिए थे, or maybe more than that, because that's what I remember. Because or almost most of the interviews में I was rejected या फिर there was some इशू या फिर देयर वाज सम लैक ऑफ थिंग। कुछ 2-3 इंटरव्यूज आई एक्चुअली क्रैक्ड, बट दोज वर ऑल्सो ऐसे रोल्स थे जो कि आई डिड नॉट रियली वांटेड टू लैंड। बट उसके बाद में देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग अ फ्यू ऑफर्स वेयर आई डिड चेंज अ फ्यू थिंग्स। आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सॉफ्ट स्किल्स। ऑफ कोर्स आई वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन माई टेक्निकल स्किल्स। काफ़ी पढ़ाई कर रहा था मैं अबाउट माई टेक्निकल स्किल्स, अबाउट द फ्रेमवर्क्स दैट आई वर्क ऑन। And at the end I did got a remote job which I was really happy about. But during all that process, and right now 2 साल ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं इन दैट जॉब, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग वन डे एंड आई फेल्ट कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स दैट आर रियली नीडेड इन performing well in a remote job as well as landing in a remote job. And ये सब skills I think employers do look at when they are about to hire a new candidate for a remote job, because employers आपको ट्रस्ट कर रहे हैं दैट आप अपने घर पे बैठ करके आपको काम देंगे एंड यू विल डू इट एंड दे विल पे यू अ लॉट फॉर इट। तो दे रियली नीड टू नो अपार्ट फ्रॉम जस्ट योर टेक्निकल स्किल्स, आप एक अच्छी तरह से बात कर सकते हो क्लाइंट से या फिर अपने टीममेट से, या फिर कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप प्रेजेंट करते हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट जब एक रिमोट जॉब ढूंढने के लिए आप मार्केट में जाते हो। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं बताऊंगा वो पॉइंट्स जो कि आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हेल्प लैंड अ रिमोट जॉब। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड सी इट। सो पॉइंट नंबर 1 जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज़ टू टर्न ऑन योर कैमरा एंड बी कंफर्टेबल विद इट। बिकॉज नाउ अब आपने डिसाइड करा है टू गेट अ रिमोट जॉब, एंड रिमोट जॉब का नंबर 1 बेसिक प्रिंसिपल है दैट यू नीड टू बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा इन एनी काइंड ऑफ मीटिंग। बेसिकली कोई फिजिकल एस्पेक्ट है ही नहीं टू बी इन टू द ऑफिस या फिर आप सामने किसी से बात कर रहे हो। नो, इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल इन एन ऑनलाइन सेटिंग जहाँ पर आप फेस टू फेस ऑन अ वीडियो कैमरा बात कर रहे हो। एंड आई नो कैमराज आर वेरी अनकंफर्टेबल, वीडियो कैमराज बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए भी इट वॉज। देयर वाज पॉइंट आई वाज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल स्पीकिंग विद माई कैमरा ऑन। मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता था, ऑकवर्ड पॉजेज आते थे बिकॉज आप खुद को देख रहे हो बोलते हुए एंड दे आर लाइक अ फ्यू अदर पीपल जो कि आपको देख रहे हैं बोलते हुए, एंड यू जस्ट फील अ लिटिल डम कभी कभी। बट या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट स्किल कि आप कैमरा के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होएं एंड आप वीडियो कॉल्स में ईजीली अपना इंटरव्यू दे पाएँ. सो सिंस नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ रिमोट जॉब, तो आई थिंक द इंटरव्यूअर जो भी आप इंटरव्यू जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, दैट कंपनी और द इंटरव्यूअर इज़ डेफिनेटली गोना एक्सपेक्ट कि आप अपना कैमरा ऑन रखें ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ चीटिंग केसेज आर ऑल्सो हैपनिंग दीज डेज. तो दैट इज़ वाई रिमोट जॉब्स के अंदर इट्स स्पेसिफिकली रियली इंपॉर्टेंट कि you are able to speak in front of a camera. So what has helped me in being more comfortable on a camera is this YouTube channel. मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं. There was a point when I was not at all comfortable. मैं बहुत ही awkward और shy रहता था कैमरा के सामने. मेरे को बहुत सारे रीटेक्स करने पड़ते थे. But now as I've made more videos, तो it has helped me to be more comfortable in front of camera, and it definitely has helped me मेरे interviews में, in my remote job interviews whichever I've given. And I'm not saying कि आपको एक YouTube चैनल चालू करना चाहिए to just be better at a remote job interview. So there are ways, basically आप एक या 2 मिनट का वीडियो बना सकते हैं अबाउट एनी टॉपिक. यू कैन जस्ट स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, और एक पॉइंट पे व्हेन यू गिव अ फ्यू टेक्स, व्हेन यू डू अ लिटिल प्रैक्टिस ऑफ दिस एंड यू रिव्यू योर सेल्फ स्पीकिंग, so I think what will happen is you will start to get more comfortable. You will see that it's not that bad. It's not that bad. You don't look that bad speaking in front of a camera, because of course those takes के बाद में you will be better anyways, and it will help you to strengthen that nerve जिसके अंदर कि आप थोड़े से शाई हो जाते हो स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. पॉइंट नंबर 2 इज़ प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़ इन सिंपल टर्म्स. बेसिकली बहुत बार इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आई हैव हैड दीज सिचुएशंस जहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया मुझसे अबाउट, इट वाज बेसिकली अ बिहेवियरल राउंड ऑफ द इंटरव्यू, जहाँ पर देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस कि आपने ऐसी सिचुएशन जब आपके साथ हुई तो आपने क्या करा. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली गेट्स यू अ लिटिल कंफ्यूज्ड, बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्ड करना होता है कि व्हाट वाज योर एक्शन जो आपने करा, एंड हाउ डिड इट गो, एंड द इंटरव्यूअर इज ऑल्सो बेसिकली एक्सपेक्टिंग a very formal response, because they are also looking for someone who can explain this kind of situation very clearly, because that will help in you communicating with your team or you communicating with your clients. तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है दैट आई हैव हैड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और आई हैव द सिचुएशन और एवरीथिंग क्लियर इन माई हेड, मैंने वो चीज़ करी होती है, बट आई गेट लाइक सो कन्फ्यूज इन माई हेड कि मुझे समझ नहीं आता कि वॉट वॉज आई सपोज टू से, एंड देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई हैव बीन रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. मेरे दिमाग में बहुत ही सारी चीज़ें थी, बट इट ऑल जस्ट गॉट जम्बल्ड अप एंड आई कुड नॉट स्पीक, एंड इट केम आउट रियली वियर्ड. So I've recently discovered this technique which is called as the STAR method, which is a very formalized and a very structured way of speaking answers is situation में usually. So the STAR method basically is situation, task, action and response. So basically जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई question आए which is on a situation कि आपने ऐसी situation हुई थी या फिर ऐसा कुछ हुआ, तो what did you do? So basically you have to first explain the situation, which is the first point, situation. एंड सेकेंड इज़ द टास्क in which हम पूरा टास्क एक्सप्लेन करते हैं कि क्या टास्क था बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, ऐसा क्या चीज़ जो हमें करनी थी. एंड एक्शन इज़ बेसिकली द एक्शन दैट यू टुक. सो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द एक्शंस दैट यू टुक, क्या क्या चीज़ें आपने करी, व्हाट प्रोसेस डिड यू फॉलो, एंड हाउ डिड यू मेक श्योर दैट द टास्क एट हैंड वॉज कम्प्लीटेड. सो बेसिकली रिजल्ट में आप एक्सप्लेन करते हो अबाउट एवरीथिंग दैट केम आउट, एंड व्हाट रिस्पॉन्स डिड यू गॉट फ्रॉम योर क्लाइंट्स, या फिर व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन दैट यू हैंडल्ड. एंड बेसिकली यूजुअली हम अच्छी सिचुएशंस ही बताते हैं, एंड इन दिस सिचुएशन सो ऑफ कोर्स द रिजल्ट विल बी गुड बिकॉज यू आर अ ग्रेट कैंडिडेट. सो यू वुड बी डेफिनेटली हैव सम गुड सिचुएशंस जो कि आपने हैंडल करी होंगी. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस वे ऑफ आंसरिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पर इवन द इंटरव्यूअर गेट्स टू अंडरस्टैंड कि आपका थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रक्चर्ड है एंड कैसे आप एक अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन का आंसर दे पा रहे हैं. आई हैव ऑल्सो टैग्ड अ लिंक डाउन बिलो विच टॉक्स मोर अबाउट द स्टार मेथड ऑफ स्पीकिंग, कि कैसे आप एक रिस्पॉन्स अच्छा दे सकते हैं फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशंस और interview questions. So point number 3 is a very important point, at least in my terms, or I make sure to always do this, is just accepting your mistakes. So I think this is a superpower जो कि आपके पास हो सकती है, because all the people that have worked in corporate or in of my earlier companies, people are very scared, at least us Indians are very scared to accept our mistakes. हमें लगता है कि हम कोई mistake नहीं कर सकते, और अगर कोई हमारी mistake देख लेगा तो that will leave a very bad impression, that will leave us not getting promoted next time. Yeah, all these kind of things do come to my mind, and मेरे दिमाग में बहुत होती थी. But then I read a book called How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, where I think Dale Carnegie explained very well कि कैसे when you start to accept your mistakes in any kind of situation, even in life, work, anything, that's when
the people around you starts to trust you more, and that kind of gives you more accountability, because people now trust you more, या फिर your company or your interviewer will trust you more, because you are when you accept your mistake, you sound like a very responsible person कि ठीक है, you know you did something wrong, and you openly accepted it कि yeah, I did it wrong, I am sorry, that was my mistake, and that's the way to move on, rather than just किसी और के ऊपर blame कर देना, या फिर blame it on the question जो कि आपसे पूछा गया है in the interview, या फिर blame on anything. If it is your mistake, genuinely it's just best way to just accept your mistake, and that will leave a really good impression on your interviewer. And I think remote work के अंदर accepting mistakes is a very amazing skill to have, because usually the employers would want someone जो कि is more forward and is someone who wants to fix things rather than play games या फिर किसी और के ऊपर blame डालना, because what will happen is that अगर हम सब remote work कर रहे हैं and हम सब एक दूसरे के ऊपर ही डाले जा रहे हैं कि दिस वाज अ प्रॉब्लम एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बट एक्चुअली तुम्हारा बग था, तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड make sure that you find a solution, because that is something that will be very much accepted and will be a very important skill to have if you are looking for a remote job. And the last point is to just know about all the remote work tools that are out there, because ज़रूरी नहीं है कि आपको एक job मिल जाए उसके बाद ही you will start to work on or use all those remote work tools, but even before getting a job कि आप कैसे interview से communicate कर रहे हैं, कैसे आप एक interview schedule कर रहे हैं, because I've seen a lot of startups सीधा आपसे आकर के टाइम पूछते हैं कि क्या टाइम पे आप यू वांट टू शेड्यूल योर इंटरव्यू, एंड आई थिंक अ रियली गुड टूल फॉर दिस इज कैलेंडली, जिसने मेरी हेल्प करी है. सो इफ HR और इंटरव्यूअर इज आस्किंग मी फॉर अ टाइम कि आप कौन से टाइम पे फ्री हैं, सो आई जस्ट सेंड देम माई कैलेंडली लिंक, रादर देन मैं एक ईमेल लिख के भेजूँ कि हाँ मैं शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे, अपने अलग अलग स्लॉट्स भेजने से अच्छा. सो दैट काइंड ऑफ feels and gives the interviewer a more professional vibe ki haan, the candidate is much more professional and he knows different tools that are available in the remote working space. Same way another tool which is called as Loom. So for example, if an interviewer or pre-rounds mein usually when interviewers asks for you to do a small task and explain it out, so you can just use Loom to record a video, and basically it gives a very high quality video. It's just an example that I'm giving. It gives a high quality video of you speaking or sharing your screen. So ऐसे different tools हैं which can help you to just navigate your interview process a little much more easier, और इससे even the interviewer or the HR feels much at ease कि हाँ ठीक है, the candidate is also very much aware with all the remote working tools, and that makes you a really good option in qualifying for that. So I think that was it for this video, and I hope ये video आपके लिए बहुत helpful था, and I just made this video because I've seen a lot of people struggling with the soft skills at these things, and a lot of people want remote jobs काफ़ी सारी हैं available, but काफ़ी सारे लोगों को चाहिए, बट दे डोंट नो कि वो किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज पीपल मेजरली ट्राई टू फोकस ऑन द टेक्निकल स्किल्स या फिर टेक्निकल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. सो एंड आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो फोकस ऑन द सॉफ्ट स्किल्स, एंड दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स दैट हैव रियली हेल्प्ड मी, और जो कि मैंने अपने अंदर इम्प्रूव करी हैं आफ्टर ऑल द इंटरव्यूज़ दैट आई हैव गिवन. And I think these will be really helpful to you if you also try to practice whatever I have mentioned, whatever points that I have mentioned in this video. And do comment down and let me know कि क्या ऐसे points थे which maybe helped you also to communicate or clearly and be better at your remote interview, because I think those comments will also help to all the other people who are watching this video and looking for remote jobs. So thanks a lot for watching again. और अगर आपको ये video थोड़ा सा भी helpful लगा, then do subscribe to my channel and do leave a like.